তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে ঠমকিয়া ঠমকিয়া। Welcome to Mirchi Indies after a very, very long time, Shan and Akriti. This is your first time at Mirchi Indies. We're just very, very happy to have you here. Thank you very much. Thank you. Thank you so much and congratulations on the great success of Mirchi Indies. आप non-film music को जिस तरह से promote कर रहे हैं, I think it's commendable and we are very happy to be here. Tell me, how did the song come about? How did you guys meet and ये गाना decide कैसे हुआ? Just half hour back he's told me that मैंने गाना जब तुमने भेजा था WhatsApp पे मैंने सुना भी नहीं था, मैंने ऐसे हाँ बोल दी थी. It started a couple of months ago, the thought of doing something with a musician from Bengal जिसका नाम है शुभम मोइत्रा. बहुत talented young musician है वो. बात ऐसे शुरू हुई कि करते हैं कुछ करते हैं, but अब जाके वो जनवरी से जो बात थी it culminated into this song. पर हमारी condition ये थी कि हम वो typically programmed song nahi karenge which really truly comes out of just a computer and you know those loops etc, and we wanted it to give that full organic real vibe जैसा कि हम actually stage पे perform करते हुए feel करते हैं वो ही हम create करना चाहते थे song में. आपने ना live music की जितनी भी वो प्यारी प्यारी जो चीजें है ना आपने उसको इतनी अच्छी तरह से इस गाने में incorporate किया है. Came down who played in the track, so Shubham is the guy who's singing in the video. That is a composer and the rest of them are the actual musicians who played on the song. जब इसका एक छोटा सा एक scratch बन के आया, the first draft of the song, I was dancing to it and शुभम की आवाज में ही था वो. उसमें और lyrics कुछ भी हिंदी नहीं थे, तो basically इसमें जो hook है, तुमरा देखो गो आशिया कमलाय नृत्य करे थमकिया थमकिया is age old folk song. तो वो रख के उसके आसपास पूरा जो गाना है वो ओरिजिनल हिंदी कॉम्पोजिशन है, नए शब्द हैं हिंदी के, तो वो सब बनाया गया है. तो मैंने वो गाना इनको भेजा शान को व्हाट्सएप पे कि दिस इज अ सॉन्ग दैट आई वांट टू वर्क ऑन एंड I'd be really happy if you can be a part of it. आकृति ने मुझे गाना भेजा था ना, on that she had put one emoji of a headphone. Okay. हेडफोन पे सुनो. और मैंने कहा कि यार हेडफोन तो है नहीं, अब कैसे सुनूं, क्या करूं? तो मैंने कहा कि अच्छा ही होगा, मैं कह देता हूँ कि हाँ करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है. तो इस तरह से हो गया. I want to know the meaning of थमकिया थमकिया. उसके पहले भी क्या वो बोला जाता है? I want to understand that. It goes like তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া. Basically in one line it just means there's a beautiful girl dancing, everybody come look at her. But in this video there was a beautiful guy and a beautiful girl dancing. नहीं, there was a beautiful girl dancing. लड़का बस थोड़ा सा कह रहा था कि आओ देखो देखो देखो. क्योंकि नृत्य तो आकृति ने किया, मैंने बस कुछ कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे करते हुए. No, I must say I like that part जहाँ पे आपने वो बंगाली स्टाइल का ये वाला proper. I love that. I was like wow. I'm obsessed with the song and I'm playing this song over and over and over again. मेरे घर वाले कह रहे भाई कुछ और गाना प्ले कर ले. मैंने कहा नहीं यार, गाना मेरी आत्मा में जब तक मैं घुसा नहीं देता ना तब तक मेरे को सुनना ही है. It is such a catchy song. मैं भी कन्फेस करना चाहता हूँ कि कभी शाम को या रात को गलती से अगर मैं ये गाना दिमाग में घुस जाता है तो निकलता ही नहीं है यार. If you guys could sing a little bit of the song बारी बारी एक एक करके. हर फरमाना पिया दिल की नगरिया में आ, अरे बाबा घर से निकल बीच बजरिया में आ. तेरा हुक्म मेरे यारा, तेरा हुक्म मेरे यारा, सर आंखों पे रखूंगा मैं तो कसम से वादा किया. तेरे आसु पास खुद को आबाद मैं करूंगा खुद को कसम से वादा किया. তোমরা দেখো গো আসিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া. তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া. কমলায় নৃত্য করে ঠমকিয়া ঠমকিয়া, এগো কমলায় নৃত্য করে ঠমকিয়া ঠমকিয়া রে. কমলায় নৃত্য করে ঠমকিয়া ঠমকিয়া, তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলায় নৃত্য করে ঠমকিয়া ঠমকিয়া. Wow, absolutely amazing yaar. This is like a big gift to all the bongs and everybody in India. This song is a big gift at the time that you have released it. It's beautiful. Your younger son is also into music. He's also a singer.
he is also a great producer and singer and everything. घर में आप लोगों की conversations क्या होती है? Actually, Soham, मेरा जो बड़ा बेटा है जिसे आपने इंटरव्यू किया है, he was very clear from a very young age that he did not want to be associated with Bollywood kind of music. You know, the music that he would listen to, the kind of music that he could relate to was very different. I was very glad that, you know, he was starting his own musical route and style. And in fact, thanks to him, I got a lot of insight into the way music is run today, you know, especially जो digital age के बाद किस तरह से क्या हो रहा है, वो उससे मैं काफी influenced हुआ. मुझे याद है एक बार हम लोग एक कॉन्वर्सेशन के बीच में उसको कह रहा था कि यार मैं क्या करूं, एक जमाने में तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये डिजिटल एज में मुझे उस तरह की ट्रैक्शन, उस तरह के व्यूज नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा है. तो थोड़ा सोच के मुझे बोला, डैड आई फील वेरी सॉरी फॉर यू. तो मैं बहुत चौंक गया, बोला ये कैसी बात कर दिया यार. So he's saying, no, I think at some point you should realize now you have to enjoy yourself. You have to enjoy your music. And, you know, if you don't appreciate what you got in all these years and you're still struggling, you're still trying to, you know, make something of your life and your career, then I feel very sorry for you. तो मैं बोला यार ये साला बाप से बढ़कर बेटा है. तो उसके बाद से I also realized that, okay, now you know what, I need to have fun. I need to enjoy myself. I don't have to worry about, you know, but he said so right. You know, these other things. Yeah. My younger son, of course, Shubh, you know, he's learning his classical music. He's learning the guitar, learning the piano. He wants to be a professional singer performer. And I've also been writing some songs for him because, you know, usko you know, Hindi गाने करने हैं. तो उस चक्कर में हिंदी भी सीख रहा है. So he's also pretty focused. But I'm very happy. दोनों की, you know, they've charted their own musical paths. That is amazing. All right, Akriti, I have interviewed both of your sisters, and whenever I keep asking them, who do you look up to? Like, what are your influences and all of that? They always say that it's Akriti. You know, she's always there for us. She always guides us. And I also want to know, how is the conversation like? Music के बारे में ज़्यादा conversation नहीं होती है, to be honest. अच्छा. Life के बारे में होती है. Okay. कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खाना खाने जाना है, क्या नया खुला है, क्या ट्राई करना है, उन चीजों के बारे में फोकस ज्यादा होता है. बिकॉज one thing that I tell them always, and I've learned it very late in life, music can be our life, but career cannot be my life. Say today my song is doing phenomenally, it has 100 million views. The next song I release has 50,000 views. So that can't make or break my behavior or the way I am with everybody or within my family. अक्सर हमारा गुस्सा अपनी फैमिली पे ही निकलता है. You know, आपके पास ये क्या है, मुझे नहीं खाना, ये क्या बनाया हुआ है, all of that होता है, natural है. And artists ज़्यादा emotional भी होते हैं. So वो I try to tell them more than often. And जब वो कुछ रिलीज कर रहे होते हैं, of course वो फर्स्ट ड्राफ्ट से लेके एंड तक का प्रोडक्ट सब मिक्स होके आता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट सुन ही लेती हूँ. वी हैव अ ग्रुप कॉल्ड सिस टॉक, जिसपे ये सारा म्यूजिक एक्सचेंज होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मेरा म्यूजिक बहुत समझ नहीं आता. व्हाई डोंट यू डू लाइक लाइटर स्टफ, लाइक फन स्टफ, लाइक वी जस्ट केम अप विद मजनू, लाइक व्हाई कांट you should do stuff like that also. I relate and I love the music that they do, but I would have to dance to it. मैंने वैसा म्यूजिक किया है बैक इन द डे, पर जैसे जैसे उम्र आगे चल रही है वैसे वैसे आई वांट टू डू मोर लाइक richer music that I haven't been able to do back then. मतलब फिल्म्स में I haven't got the opportunity to sing songs like घूमर और लाल इश्क और things like that. मैं शान से डिस्कस कर रही थी, बता रही थी उनको how he has been releasing independent tracks one after the other and it is so inspiring. और मैं पता नहीं किस चीज का वेट कर रही हूँ 3 साल से, म्यूजिक बना बना के हार्ड डिस्क में डाले जा रही हूँ. So ये जो मैंने खुद के लिए एक जिंक्स तोड़ा है, अब I think with थुमकिया वो जिंक्स फाइनली टूटा है and this is hopefully going to be the first of many. 3 years I think almost of conversation with my own sisters, and they've released I think 4 singles. And we finally managed to put something out, and there's a lot more in the pipeline. When you have young siblings, then you keep reminding you of your age, but when you have old elderly friends like me, let me also remind you that we are very young and you don't have to worry about you know that you're not being your age. If you do dance music, you're a fantastic dancer, you're a beautiful girl, so don't worry about those things. अब देखो ना, मैं अगले साल 50 का होगा, अभी भी मैं डांस म्यूजिक कर रहा हूँ. Out of the two of us, you are in the gym right now. I'm hoping that the guys can meet face to face and हम लोग और बातें करें. जरूर.
आपको तो पता है कि मैं टाइम टू टाइम अपने सिंगल्स निकालते रहता हूँ yes. which better place to promote them but in Mirchi Indies. तो मिलते रहेंगे, I'm sure. Absolutely. Thank you so much, guys, for doing this with us. Thank you. And I'm going to go and listen to the song again. So bye. Thank you so much. Take care. Bye.